the discussions due to the leakages and several government schemes. Reduce corruption and leakages. कैश ट्रांसफर क्या होता है? Enable poor access goods of their need with better quality of choice. Enable poor access good and both bypass brokers को bypass करेंगे as well as the reduce the waste and holding cost. Waste holding cost enable poor to access good of their need का good with better quality of choice. Help to reduce the पैसे से कैश ट्रांसफर होता है इंडिया में. हेल्प टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट विथ रिड्यूसिंग लीकेज. हेल्प टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सकता है. लीकेज बेटर टारगेटिंग स्कीम. पैसा पॉसिबली डाइवर्सन्स. जिंदगी में कोई कमा के नहीं लाता, सब ये आर्ट से कमाया हुआ है. मगर अमीर गरीब, जो लूट पाया वो अमीर, जो नहीं लूटा वो गरीब. Possible diversion of a cash by household for other non-productive usage. Possible diversion of कैश का डाइवर्सन होगा for other usage में increase. Cultural decisions related to cash in households tend to be made by men who may not spend the money on food. Cultural decisions relating to cash in household tend to be made by men who may or may not spend the money on food. जो खाने के लिए पैसा नहीं खर्चा करते हैं. Need huge investment for building ground level infrastructure like ICT. Need huge investment for building ground level infrastructure like ICT. Connectivity. ICT. Connectivity. बेसिस ATM etc. ATM होने से भी सही होगा. In cash transfer scheme, there will be undoubtedly by case of non-payment of adequate payment to beneficiaries. The Indian government ambition of establishing a cash transfer systems. इसलिए इंडिया में कैश ट्रांसफर सिस्टम इज गिविंग टू पुअर्स को पैसा दिया जाता है, फिर भी घोटाला होता है. However, policy makers should be aware of very ambitious implementation to targets. भारत में India is the second largest. India approach towards the meeting the country's growing energy demands. सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड में भारत में सब ठीक है, मगर किसान, नौजवान, छात्र, स्टूडेंट्स, दे शुड कंटेस्ट इलेक्शंस, दे शुड यूनाइटेडली. इंडिया में कभी 7 लाख गांव एकजुट नहीं हो सकते हैं. इंडिया में स्टूडेंट्स एसोसिएशन नहीं है. इंडिया में ऑल यूनिवर्सिटीज नॉट यूनाइटेड. जब यूनाइटेड हो जाएंगे ना, इंडिया बेहतर हो जाएगा. पीपुल्स कमिंग फॉर द प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, मगर पीपुल्स स्टूडेंट्स दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. लोगों का वोट है, मगर लोग सोचते हैं कि हम खड़े होंगे तो कोई वोट नहीं देगा. स्टूडेंट्स नॉट यूनाइटेड, किसान नॉट यूनाइटेड, फार्मर्स नॉट यूनाइटेड, वुमेन नॉट यूनाइटेड. सो रिच पर्सन विनिंग इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा देता है पॉलिटिकल पार्टी को, रिच पर्सन, दैट इज करप्शन. वही हट जाएगा तो देश सोना हो जाएगा. इंडिपेंडेंटली कोई भी चुनाव जीतेगा तो इट इज़ बेटर फॉर द डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा. जब इंडिपेंडेंट चुनाव जीतेगा, कोई पीपुल्स नॉट वोटिंग, लोग 20-30 करोड़ लोग डोंट वोट नहीं देते हैं, तो पढ़ाई लिखाई IAS IPS कुछ फ़ायदा नहीं होता है. हमारे देश में डेमोक्रेसी मजबूत होना चाहिए. इसके लिए स्टूडेंट्स 50 सीट MP इलेक्शन स्टूडेंट को जीतना चाहिए. किसान 100-150 सीट किसान, 100 सीट किसान, फार्मर्स विनिंग इन द इलेक्शंस.
India is second largest populated country in the world. It needs huge amount of energy to fulfill various needs. Really, energy plays a vital role in the economic growth. Energy. It has a direct influence or impact over the field of industry. हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडिया में एनर्जी वेरी नेसेसरी इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज डायरेक्ट कोयला विदेश से लाते हैं खरीद के ज़्यादा पैसों से बड़े अमीर लोग कोयला घोटाला टिल मार्केट मैच्योर्स रेगुलेशन अक्रॉस द एनर्जी स्ट्रीम्स इन नेसेसिटी भारत में किस स्टूडेंट्स सरकार होने से बहुत अच्छी अच्छी ब्रेन आएगी सोचना किसान और बेहतर हो सकता है किसी जब फार्मर्स विल कम टू द पार्लियामेंट एंड असेंबली पार्लियामेंट जब असेंबली जाएंगे टिल मार्केट मैच्योर्स रेगुलेशन अक्रॉस द एनर्जी स्ट्रीम्स इन नेसेसिटी फिक्सिंग द प्राइस एंड सोर्स एलोकेशंस टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ट्रांसपेरेंट बाय टारगेट सब्सिडीज countries growing energy demands compare the success transparent and targeted subsidies, improved efficiency across the energy chain, policy that reflects externalities of energy consumptions. Because India approach trust meeting countries growing energy demands compare the success. Asian giants which were perhaps the fastest growing energy. इंडिया सब फास्टेस्ट सही है डेमोक्रेसी में फास्टेस्ट की नहीं हो रहा है ऑलवेज गवर्नमेंट सर्वेंट दे आईएएस ऑफिसर्स दे आर बाइस्ड पॉलिटिकल पार्टी को बाइस्ड हो रहे हैं सो बिट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर ब्रिटिश जजेस ब्रिटिश आर्मी divided into India and Pakistan. So all British minded peoples they are in army में भी है and IAS officers and judges में भी है corrupt officers में भी है 1947 those officers are their grandparent or parents उनकी पिता सब अभी जो ऑफिसर्स हैं उनका रिश्तेदार जजेस जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश जजेस में फेडरल कोर्ट में थे तो चेंज नहीं हुआ है इंडिया में ऑफिसर्स वही हैं जजेस वही हैं समथिंग चेंजेस 1861 पुलिस एक्ट है पुलिस shows that view of the government to meet the demand for energy service sector at competitive prices to provide subsidies to the energy needs in India so giving the subsidies गिविंग इंसेंटिव्स इंडिया में दिया जा रहा है भारत में सरकार है इंडिया गवर्नमेंट है मगर प्राइवेट लोगों को बिजली दिया जा रहा है वो लूट रहे हैं पैसा सरकार के पास ज़्यादा नहीं आता है अमीर के पास चला जाता है दैट व्हाई इंडिया इज पुअर गिविंग इंसेंटिव डिसइंसेंटिव टू रेगुलेट मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर पॉलिसी दैट रिफ्लेक्ट एक्सटर्नलिटी ऑफ एनर्जी कंजप्शन के लिए इम्प्रूव एफिशिएंसी अक्रॉस द एनर्जी कंजप्शन में रिड्यूस होना चाहिए फिक्सिंग द प्राइस एंड सोर्स एलोकेशन टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स पॉलिसी shows view the government to meet demand for energy service of sectors at competitive price and provide subsidies to the energy needs to be household को सब्सिडी चाहिए India's per capita electricity consumption only 615 kilowatt per year as compared to world average 25.6 kilowatt and 1585 किलोवाट इन चाइना में ज़्यादा बिजली कंजप्शन करते हैं फिर भी इंडिया में बिजली नहीं मिलता है कंपनियां बेच देते हैं विदेश को डिस्पाइट द फैक्ट द इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कंपनियां बहुत सारा फायदा होता है भारत में ट्रांसपेरेंट एंड टारगेटेड सब्सिडीज सच फिक्सिंग द प्राइस एंड सोर्सेस एलोकेशन टू बी डिटरमाइंड What is the round tripping in the context of FDI inflow? FDI inflow and why it has been in news recently in case of India.
Round tripping is defined a form of a barter that involves company selling and यूज एसेट्स। इंडिया में सब अच्छा है मगर इलेक्शन कोई नहीं लड़ रहा है। आम किसान जनता गवर्नमेंट सर्वेंट मदद नहीं कर रहे हैं जो आम आदमी को इंडिपेंडेंट जितना चाहिए। गुड्स ब्रेन आई सब शुड बी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, स्टूडेंट्स कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फार्मर्स ऑफिसर्स and scientists should be contest election. Why round tripping in the context FDI inflow? Why has it been news recently in case of India? Round tripping is defined a form of barter that involves a company selling an unused asset. कंपनी जो सेलिंग कर रहा है unused asset जो asset है to another company while at the same time agreeing to buy back the same or similar asset about the same price में खरीद रहा है। This is money laundering techniques. Means there is a view the bulk of the GDR or ADR as well as FII foreign is nothing but money belonging to Indians stashed away in Switzerland में and tax havens that is brought into India. जमा हो रहा है that is brought into India. Recently it captured the bulk of the media attention and air time because the opaque participatory note mechanism of the FII regime has given a fill-up to this practice of round tripping. What is round tripping in the context? Round tripping is इंडिया में जो पैसा स्विस बैंक से आता है form of a barter that involves company selling an unused assets to another company. Company another selling करे asset को unused asset another company while at the same time agreeing to buy back the same or similar asset at the about the same price में. This is money laundering techniques. There is a view that bulk of the GDR, ADR as well as FI invest इंडिया में बहुत सारे पैसा स्विस बैंक में है। स्विस बैंक जमा करते हैं, कौन जमा करते हैं तो अलग बात है, आपको पता है। Here are Uruguay round negotiation and the resultant. वर्ल्ड में बहुत सारी इंडिया में स्विस बैंक्स में जो पैसा घूम घूम के आता है, भारत में बहुत सारी पैसा स्विस बैंक में है, उसको भी आने से भी देश का जो लोन चुकाया जा सकता है। बट हु विल टेक इट, कौन लाएगा? जब किसान सरकार होगी, स्टूडेंट्स आम आदमी सरकार में जाएंगे। जिसका पैसा है वो सरकार में रहने से कैसे पैसा आएगा? नहीं आएगा। इंडिया में बिजली खपत बहुत कम हो रहा है। वी आर मेकिंग सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट with world countries which are rich in this field to establish the nuclear power reactions to produce the electricity to meet the demand and also reduce the thermal power plants. Establish nuclear power sectors to produce electricity to meet demands and to reduce the thermal power plants in order to control the pollution and also considering the availability of coal का कंट्रोल द पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए availability of coal thermal power 15 मेगावाट, इंडिया में हाइड्रो पावर रिन्यूएबल एनर्जी 5000 न्यूक्लियर 5780 मेगावाट, थर्मल 21000, हाइड्रो 44,000, 50,000 renewable energy sources. However, China is presently engaged in a strong effort to control its rising energy. चाइना कंट्रोल कर रहा है। China is controlling presently engaged in strong effort to control its rising energy use while promoting rapid growth of its economy. Both Asian giants are progressively marching towards the goal of achieving self-sufficiency in energy sector, but China is marching fast on track. China बहुत सारी energy preparing, achieving self-sufficient energy, and China follows state control pricing formula, where India followed market control pricing formula. चाइना लोगों को बहुत सारी पैसा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। चाइना में डिक्टेटर सरकार है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट है, सबको काम मिलता है। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्टेज
स्कूल में मोबाइल बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स ऑल आर, बट इंडिया में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सो इंडिया में लोग जाना चाहिए पार्लियामेंट को, किसान, नौजवान। एक्चुअली उरुग्वे राउंड negotiation and the result and trade related. Uruguay round of actually have the